चूज़ मतलब मेरा सिनेमा 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 खाली एक ही दिमाग में रखकर, और इंडियन सिनेमा मतलब भारत का सिनेमा, ये ऐसा नहीं कि साउथ को ही अच्छा लगे या नॉर्थ को ही अच्छा लगे, कि वहाँ अच्छा लगे। मूवी बनाने से मतलब ऐसा नहीं है कि स्टार्स के साथ ही वो मूवी बनाओ या किसी के साथ, मतलब जो भी मूवी बनाओ स्टोरी कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट रहेगा तो इंडियन सिनेमा कभी भी चलेगा। ये मेरा एक मानना है। और आप लोगों ने ऑलरेडी कश्मीरी फाइल्स, कार्तिकेय टू और काफ़ी मतलब हिंदी में भी जो मैं लेके आया हूँ उसको आदर दिया है, उसके लिए भी धन्यवाद। तो कंटेंट रहेगा तो कंटेंट को चूज़ करना जो इंडियन मतलब घर घर में जाके जो घर हर बच्चा देख सके, बच्चा सब जन देख सके, वैसी मूवी बनाने के जरूरी है। भाई आई थिंक हमारा बस यही है कि यू नो इट्स टॉम हैंक्स ही सेड इट इन एन इंटरव्यू सेड अगर आपसे पूछा जाए कि आपके फ्लॉप फिल्म्स पे आप कैसे रिएक्ट करेंगे, उन्होंने बोला आई विश आई न्यू दिस टू शैल पास। तो मैं हिट या फ्लॉप कोई भी चीज़ मैं बहुत टेम्परेरी रखता हूँ दिमाग में। मेरा बस भले वो कंपटीशन हो, भले वो कुछ भी हो, वो यू नो इट्स अबाउट बीइंग बेटर देन येस्टरडे बस। और किसी भी चीज़ के बारे में सोचते नहीं है कि यार चल आई मीन it's easy for me to say also because by God's grace पिछले 6-7 साल में every film I've done has done well. You know, every producer here is somebody I'm working with the second time or the third time. ऐसा नहीं है कि पहली बार काम कर रहे हैं हम साथ में. So कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भी मुझ पे विश्वास करते हैं और मैं भी वो ट्रस्ट को I take it very responsibly. तो बस आगे बढ़ना है यार और बड़ा बनाना है और आगे बढ़ना है बस. मेरा सवाल भी इसी से कनेक्टेड है अवधि, आपसे भी और अभिषेक जी और डायरेक्टर से भी है कि आप तो कह रहे हैं कि आपने कंटेंट बेस्ड इसको भी बनाने की कोशिश की है और अ, इसके लिए एक्साइटमेंट भी है ऑडियंस के बीच में, लेकिन जहाँ तक इस जॉनर की फिल्म्स हैं, जैसे कि अगर अब अभी मिशन मजनू भी आ रही है और भी पहले टाइगर जिंदा है और बहुत सारी फिल्में आई हैं, तो उनसे कितनी डिफरेंट थी ये फिल्म इसको चूज करने की वजह उस जॉनर में? आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है हिंदी सिनेमा में दो किस्म के स्पाई फिल्म्स होते हैं. वन इज़ दैट सॉर्ट ऑफ वेरी रियलिस्टिक इंडिया पाकिस्तान काइंड ऑफ जो रियलिज्म में राजी जैसे फिल्म्स दिखाते हैं, स्पाई फिल्म्स बहुत ही रियलिस्टिक. एंड देन द अदर इज़ अ वेरी सॉर्ट ऑफ कमर्शियल, लाइक पठान एंड वॉर एंड ऑल दैट. I think the G series is something else. It's, I would say, it's a decorated reality. मतलब realistic है but काफ़ी decorated है and it's very edgy. तो शायद मैं ये कहूँगा कि the standard of it is not so much about making it more commercial. The standard of it is making it more cooler. एक स्टाइल दिखाने का एक तरीका ये होता है कि आप स्लो मोशन में चलो या नॉर्मल मोशन में चला, जिस तरह से आपको कैप्चर करते हैं वो स्टाइल होता है. सो आई थिंक हमारे सीरीज में वी आर नॉट लुकिंग टू यू नो इट्स नॉट लाइक अ सॉन्ग डांस काइंड ऑफ series. It is a very edgy and cool series. That's the goal that we're going for. But all of it is rooted again in a very realistic thing कि हम it's about India. If you've seen part one, the dubbed version, it's about India. The whole thing, it's a very stylistic take on India. The whole point of it is what he wants to do for the country. Hi, Adivi. Hi. Samir here from Movie Talkies. भाई कैसे हैं? Yeah, so Godacharya had this thing, Trinetra, the word actually. So I just want to know, from where did this idea come from? The Trinetra agency, is it inspired from some agencies or it is completely fictionalized? And will it be continued in the second part or you guys are exploring something new? It will be continued. It will be continued. Trinetra is the agency for which Agent 116 works for in the film, a reference to Lord Shiva's third eye. तो हमें यही लगता था कि बिकॉज थर्ड आई कैन सी एवरीथिंग, तो एक ऐसा एजेंसी होना चाहिए इंडिया में जो हर इंडियन को प्रोटेक्ट कर सकता है एंड कैन वॉच ओवर एवरी इंडियन. दैट वाज द पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग द थर्ड आई. तो हमने वो शिवजी का थर्ड आई त्रिनेत्रा का नाम के लिए यूज़ किया. Hi Adivi, this is Nikita from India Forums. My question to you is, Hindi film industry में हमने आपको देखा major में, after which came Hit 2 and now G2. तो quite action genre में हमने आपको देखा है. Does ever the thought of being stereotyped to this genre bothers you?
यार मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ, आई ऑलवेज ट्राई टू सॉर्ट ऑफ हैव अ ब्लेंड ऑफ इमोशंस इन माय फिल्म. जैसे मेजर में देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लव स्टोरी. तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि माई मॉम, माई डैड, यू नो, दे ऑल शुड बी एबल टू वॉच द फिल्म. तो मैं जितना भी एक्शन करूँ उसमें इमोशन ज़रूर होता है. सो दैट्स व्हाई आई डोंट फील इट्स गेटिंग स्टेरियोटाइप्ड. Hi, sir. This is Disha from News 18. सबको 6 महीने के बाद मिल रहा हूँ. If I remember right, I remember reading last year that when you were making the first movie, you reached out to Krishna Garu and you asked him to, appear in a cameo role. Did you, by any chance, get a chance to talk to him about G2? You know, the craziest thing was when we were making part one, I found out that superstar Krishna Garu has an office in my building. तो ये बहुत ही क्रेजी था. तो जैसे वो पता चला मैं भाग के गया, एंड लकीली ही वाज देयर. सो व्हेन वी आस्क्ड हिम टू एक्ट, ही सेड नहीं अम्मा, आई एम ऑलरेडी गॉटन ओल्डर, सो आई एम नॉट acting anymore, but you can use any of my clips from the original whenever you want. So we always had his blessing. So in fact, when Mahesh sir opened the AMB multiplex in Hyderabad, which is India's premier multiplex, I remember clicking a picture with Krishna Garu and I said, from 116 to the other. You know. Shesh, hello. Can you hear me, sir? Yeah. Yeah. Okay. यार जिस तरह का रेस्पॉन्स बाहर मिल रहा है, जिस तरह से लोग प्यार कर रहे हैं, जिस तरह से सराह रहे हैं आपको, आपके काम को, और जितना भी काम आपने किया है उसको बहुत तारीफ, बहुत लोगों ने सराहा है, और शुरू से लेकर अब तक कहीं रुके नहीं हैं विद बाय गॉड ग्रेस, और वी लव कि आप कंटिन्यू करें. और जिस तरह का जो भी अभी हमने ऑन स्क्रीन देखा वो बहुत माइंड ब्लोइंग था. मैं ये तो नहीं कहूँगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, इतना सारा प्यार इतने कम वक्त में, जो स्टारडम आपको मिला है उसके लिए लोगों को 20 साल लग जाते हैं शायद, जहाँ तक मुझे समझ में आता है एज अ जर्नलिस्ट. जितना प्यार आपको और जितना प्यार आपके काम को मिला है, कहीं इतने सारे प्यार से, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बोल रहा हूँ, डर लगता है कि जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? शायद नहीं, क्योंकि काफ़ी धक्के मुक्के खा चुके थे हम, इन बिगिनिंग ऑफ माई करियर, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम इन इंडस्ट्री, आई डेंट हैव एनी कॉन्टैक्ट्स. मैं बाहर से आया था. सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी लोग, काफ़ी हिंदी ऑडियंसेस ये सोचते हैं यार 1 साल में क्या स्टारडम कमा लिए बंदे ने. मैं बस ये कहूँगा, इट टुक मी 12 years टू बी एन ओवरनाइट सक्सेस. ओके, एक सवाल और पूछना चाहूँगा. आपने जब भी इंटरेक्ट किया, शुरू से मैं अब देख रहा हूँ आप बड़ा जोर दे रहे हैं इस बात पे, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, एंड आई रियली अप्रिशिएट what you're trying to convey. It was always there in your mind. ये बहुत जोर दे के कहा जा रहा है, और मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूँ और एग्री करता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए. रीजनल, और वो मराठी है, और वो साउथ हैं, वो तेलुगु फिल्म है, कोई ख़ास स्पेसिफिक वजह? हालांकि बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, हिंदी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पे जोर दे रहे हैं आप. हाँ, बिकॉज अभी जैसे अभी हम बम्बई में हैं, महाराष्ट्र में सबसे पॉपुलर फिल्म इस वक्त है वेड. नाउ वेड इज़ अ ऑफिशियल रीमेक ऑफ अ तेलुगु ब्लॉकबस्टर मछली. तो मछली ब्लॉकबस्टर है, ये वेड भी ब्लॉकबस्टर है. इन दी ओल्ड डेज वी हैड अ फिल्म रामुडू भीमुडू, जिसको दिलीप कुमार साहब ने बनाया राम और श्याम. फिर उसको रीमेक किया गया सीता और गीता. राम और श्याम को ही सीता और गीता में बनाया, बट देन हमने फिर से सीता और गीता को रीमेक किया गंगा मंगा करके. सो when you see this interchange, this cross pollination, जिस तरह के आइडियाज़ हम एक के आइडियाज़ को अपनाकर हम जिस तरह से बढ़ाते हैं, बेहतर करते हैं एक दूसरे को, we are Indians first. Hi, Sesh Center. You're Mayur here from Beyond Bollywood. Great to see you. Firstly, Happy New Year to all of you all. Sesh, obviously, I didn't have the pleasure of seeing Gudachari, but obviously I saw you, my introduction to you, I would say also as a person who came with Major, and I was obviously very humbled, by that experience, both in terms of cinematic and you as a person. I think the take back for me from that film was, the intensity of the action, and I just wanted to ask you as a film buff, today, actors, of your age, basically today, like in terms of action, that OTT action, do you think it's on the wane, and it's only when an actor is willing to put his body on the line, that's the kind of action which is going to grip. Like even in this teaser which we saw, the background score, it's, as you said, it's cool, and I found it world class.
So is that the way to go? You know, an action hero has to put his body on his or her body on the line. I think you have to put your heart on the line, भाई. You know, दिल से काम करोगे तो ही चलेगा. You know, I think वो ज़माना गया कि हम बॉडी डबल्स के साथ काम करें. बिकॉज लोग आजकल वो समझ चुके हैं कि हर चीज़ को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है VFX में. वो समझ चुके हैं. तो अब जो बंदा असल में करेगा कोई चीज़, जो बंदा प्रॉपर एक्शन करेगा, जो बंदा कोई भी चीज़ इफ़ ही शोज इट इन एन ऑथेंटिक वे, ऑथेंटिसिटी तो हम रिक्रिएट नहीं कर सकते ना. सो द गोल इज टू बी ऑथेंटिक. So glad you said that. Hi, this is Harshada here from Screen Graphia. Here. इंडियन सिनेमा कोई भी हो, एक्ट्रेस के बिना पूरा नहीं होता. तो आपके एक्टर कहाँ है, एक्ट्रेस कहाँ है एक, और दूसरा ये है कि थ्रिलर है जहाँ तक मुझे लगता है, तो उसमें एक सिजलिंग, ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग होनी चाहिए. तो उस बारे में कुछ बताएं. होनी चाहिए या तो होगी, शायद आप बाद में रिवील करेंगे, उसके बारे में कोई बताएगा. मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारी कहानी को सुन लें, फिर आप सिजलिंग और के बारे में पूछें. बट नो, वी विल बी डूइंग द कास्टिंग. द थिंग इज़ वी हैव जस्ट अनाउंस्ड द प्री विजन कि हम ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ इट्स गोइंग टू टेक अस 1.5 ईयर टू ब्रिंग दिस फिल्म टू यू. इस प्रोसेस में हम अलग अलग प्रेस जंकेट्स और इवेंट्स में हमारे कास्टिंग डिसीजंस, नए नए कंटेंट्स को रिलीज़ करेंगे. बिकॉज ये पहली बार है कि एक ऑल इंडियन फिल्म जो तेलुगु में बनाया जा रहा है वो मुंबई में लॉन्च हो रहा है. ये पहली बार है. बिकॉज हम दिखाना चाह रहे हैं कि हम ये हर किसी के लिए बना रहे हैं. टुमारो वी हैव अनदर लॉन्च इन हैदराबाद फॉर द सेम फिल्म. बट विल देयर बी एनी चांस ऑफ यू विल बी कास्टिंग एनी ऑफ द हिंदी फिल्म हीरोइन? नहीं, वो तो नॉर्मल है. लॉट ऑफ हिंदी एक्ट्रेसेस वर्क इन आवर फिल्म्स नो. वो तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है. अगर मैं स्पेशली अनाउंस करूँगा तो सब मेरे तेलुगु फैंस सब मुझे ट्रोल करेंगे, बोलेंगे यार हर तेलुगु पिक्चर में तो हिंदी वाले आगे काम करती हैं, आप क्या नया अनाउंस कर रहे हैं. सो आई मीन एट द एंड ऑफ द डे वी जस्ट वांट टू कास्ट द बेस्ट पर्सन फॉर द रोल. शेष यहाँ पर आपके लेफ्ट में. हाय शेष, मुझे याद है जब हिट फर्स्ट केस आई थी, तो जब वो हिंदी में बहुत पसंद की गई थी, जब राजकुमार ने किया था, आपने एक लाइव के दौरान कहा था कि हमने हिट फर्स्ट केस को इसलिए हिंदी में नहीं किया क्योंकि हमें लगता था कि कौन देखने आएगा, हिंदी ऑडियंस सिनेमा घरों में हमें कहाँ देखने आएगी. लेकिन अब लगता है मेजर के बाद कॉन्फिडेंस बहुत हाई है हिंदी ऑडियंस के बीच स्पेशली. Yeah, definitely. I mean, by God's grace, 2022 was a major hit for me, so that was good. मैं खुद एक नया एडिशन था. I came into the hit franchise after राजकुमार राव because part 1 was with another Telugu actor. जी. तो फिर राजकुमार राव है और फिर मैं वाइजैक केस में ऐड हुआ था. So I think it is going to be a multi-city franchise hit. तो मैं ये बस कहूँगा कि जिस तरह की क्रेडिबिलिटी है of this team, the kind of directorial talent we have, the kind of producers we have, जो कोई भी फिल्म को कहीं भी लेके जा सकते हैं. That is their ability. You name it. Every big film that's happening right now in South India, unannounced or announced, is happening between these three guys कहीं ना कहीं. So जिस तरह का team है, we have the ability to bring the film anywhere and bring audiences from anywhere to the film. G2 के बारे में बात करते हैं. अभिषेक, आपसे मेरा सवाल है, जो स्पाई फिल्में हैं उसका जो फ्यूचर है आप वो कैसे देख रहे हैं इंडिया में? क्योंकि फिल्में बनती हैं, पसंद भी होती हैं, लेकिन उतने नंबर में नहीं बन रही है. तो किस तरीके का फ्यूचर आप देख रहे हैं स्पाई फिल्मों को लेकर? I am confident that G2, see what happened with when G1 came out, it brought back the trend of spy cinema in South India. So there have been so many films that have been announced after Gudachari because of the trend it created. तो हम confident हैं कि हम यही चीज़ we're going to be creating in North India with the G series. Hi Adivi, Princey here. Hi, Happy New Year. All right, so continuing to the question that she asked, which is your confidence amongst the Hindi-speaking cinema. What is the connect that you found? What is your understanding of the Hindi-speaking audiences? That is one question. And the second question is, when it comes to a spy thriller, there's a different mood that comes on screen, in terms of the look, vision. How is G2 going to be like? Was second question, I think let Vinay answer that Okay. first. How Yeah, is the please. mood going to be?
One thing I can say is that a few days back we are in the writing session and we're looking back what we wrote, and we suddenly realized that it has double the action compared to an average action film. So we looked at each other and we smiled, and that's what we're looking at for G2, ambition-wise. And to be honest, the DNA of G1 will be intact in G2. The emotions or the sense of action it had, or all the twists and turns. If any of you watched the Gurachari one, you'll know that. Yeah, we want this to be relevant for all parts of the country, not just a story about a person in Andhra Pradesh or Telangana. So that's something we're looking after. And we also have a plan. We're this film's going to be shot in 5 different countries. Okay. So the goal is to sort of create a true blue authentic experience. Okay, and about your understanding of Hindi speaking audiences, your fan following that you have, which is huge now. You know, मुझे बस लगता है हम दिल से बात करें तो दिल से काम करेंगे तो चल जाएगा बस. You know, Sure. बाकी सारी चीज़ें तो so even like हम जब नीचे वो पर्दा सब खोल रहे थे ना, मैं थोड़ा सिंपल हो जाता हूँ. मैं वो एकदम वो शोर शराबा मुझे I don't know so well, but I'm just happy to be here and we are very confident कि हम जो experience आपको देने वाला है, it's going to be something you've never seen before. शेष अभी फिलहाल यू नो दिस इज़ अ स्पाई फिल्म एक्चुअली यू नो, और अभी पठान में भी यू नो जब वो वर्ड रॉ यूज़ किया गया था, आई थिंक सो कि स्पाई में भी शायद ऐसा कोई वर्ड यूज़ करे जहाँ पर रॉ करके वर्ड आया हो, तो सेंसर ने चेंज करने के लिए कहा था इनफैक्ट यू नो. तो उस चीज़ को लेकर आप लोग एज अ फिल्म मेकर कितना उस चीज़ पर ध्यान दे रहे हो, और या इस तरह से कुछ हमारा त्रिनेत्र है, जैसे उन्होंने पूछा, हमारा त्रिनेत्र है, रॉ नहीं है. कहीं पर भी रॉ अगर यूज नहीं कर रहे इनफैक्ट. ओह अच्छा, ठीक है. Vinay, don't write raw in the movie. No, I'm just asking like you know उस पर आपका रिएक्शन कैसे रहेगा, because you know सेंसर बोर्ड ने कहा था कि ये जो वर्ड है फिल्म मेकर्स को चेंज कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करता है. कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करता है. मुझे नहीं पता कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया पठान में, बट you know ours is a different agency. Hello, this question is addressed to the director. Look here, please, to your right. I'm here. My name is Siraj Sayed. I'm from filmfestivals.com. The question is, in the most iconic spy series that we've ever seen, the James Bond series, the editor became the director. The editor of a few films became the director. You have done the same journey yourself, and that is he applauding you. Thank you very much. But I should tell my journey first. I was not the editor to begin with. I started as an assistant director for Gudachari 1, and somehow he realized that I'm good at editing, and I sat in editing process of the film, and he made me the editor for Major, and I was also the first AD of Major. So I'm an accidental editor, not an intentional editor. Agreed. So, the question is that in an action film, especially a spy thriller, knowing editing serves half the purpose already. I mean, half your job is done. Isn't it a very great help to know editing when you are shooting a spy thriller, especially? Definitely, it also reduces the cost for the film because we do the short division before and we know what we want. Yeah, to be honest, yeah, it helps a lot for any director to have an edit sense. Sesh, I have another question. With all due respect, I'm sure he's done a sorry, one little thing more. According to you, which are some of the most iconic, well-edited action films that you have seen? I don't want to name one. There are many good action films. You can name a few, no problem. Indian or foreign, it doesn't matter. I can't remember anything right now. Maybe I'll think about it and I'll tell it to you personally after the event. Thank you. Sesh, I have another question. While, with all due respect, I'm sure Vinay has done and would do a fabulous job. But why not go with the same director? Because usually that creates a more seamlessness. And along with that, another companion thing. No matter how much, and Godachari 1 was very good. I remember during when we spoke at Taj for Major, I even told you about that.
And we have had some fantastic spy movies, be it Baby, be it Krishna Garu's Gudachari, be it Tiger, be it War. But yet for all, when a Mission Impossible comes, when a James Bond comes, people still say, "Arey, look at what James Bond is doing. Look at what Ethan Hunt is doing." Why is somewhere that respect is lacking? So these are my 2 questions. Yeah, first question though, I think it was Shashi's idea that Vinay should direct. Shashi wants to, for all purposes, he has a different story drive that he's on, and we wanted to continue the G series immediately because originally G2 करने का plan 2018 में था. You know, इन सब ने मेरे birthday के लिए announce किया था वो, पर मैंने उसके बाद 2 films और बनाए, and now finally, so we couldn't wait any longer, and Shashi was the one who suggested Vinay as the director. So it's not only with Shashi's blessing, in fact, it was Shashi's idea. As far as what was the second question again? I'm sorry. The foreign spy. Yeah, वो I think थोड़े हद तक वो हमारा perspective भी है, because you know घर की मुर्गी दाल बराबर types. Because you know when RRR released, and you know if you would have asked an Indian person what would Western audiences think कि यहाँ पर नाच रहे हैं, यहाँ पे ये वाले action scenes, हम शायद ये बोलते थे यार हमारे नाच गाने कौन देखेंगे वहाँ पे. But now the Western audiences are the one dancing at the RRR screening. So कहीं ना कहीं हमारे perspective को बदलने की ज़रूरत है. It's not so much कि ये films अच्छी नहीं बन रही हैं. And hopefully, if you personally felt that, my hope is कि with part 2, with G2, we'll be able to create an experience जो आपको लगे ये उसी level का है. All right, with that, ladies and gentlemen, thank you so much. That's all we have for you. We've covered enough, yeah. Like pre-vision announcement में we've covered a lot of things. हाँ, ये actually pre-release का हो गया था. हाँ, मुझे ऐसी लग रहा है जैसे चल रहा है अभी release date देख लीजिए चाहिए नज़दीकी theaters में, because these people are not gonna say it. They're like very humble to say that, but शोर मचाने के लिए मैं हूँ ना. All right, so it's time for a final photo op now, ladies and gentlemen. And before that, would like to invite on stage a very important gentleman, ladies and gentlemen. Mayank Singhania Saab is here, so yes, of course, sir, we would want you on stage. And a quick few words on the movie, if you'd like to say something on G2. Hello everyone, thanks everybody for being present here today. So we have a vision of making this movie a very big and a very, what do I say? It will be on a massive scale. So we just wait and watch. There is a long wait for this, and it has come now. We'll be delivering something really massive this time. Thank you so much, Singhania साहब. नाम ही इतना फिल्मी एकदम वजन बढ़ गया है यहाँ पे. Thank you so much. जोरदार तालियां इस टीम के लिए, ladies and gentlemen, one more time, please. And we'll have a quick photo op, yeah. You guys can go click, click, click.